Hello everyone, myself Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I will discuss some of the questions from mathematics sections. So these questions have been provided. So let's start with them. So let's take the very first question: How to prove a number irrational? So basically, this question is a standard question. Basically, what we do in this is we take a number and we assume it to be rational, and rational numbers are in the form of p by q. So let me show it to you. Let me take the example of root 2. So root 2. So let me take the example of root 2 and show you how we can prove root 2 to be a rational number. And by the same way, you can prove any other number also. Okay. So what we do is basically we take root 2 and firstly we will assume root 2 to be a rational number and we will take it in the form of p by q because any rational number can be written in the form of p by q. So let root 2 equal to p by q, where what I'm assuming P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0. Because if Q is equal to 0, then this fraction can't be defined. You know this already, कि denominator can never be equal to 0 in any fraction. So here what I'm assuming, here I'm assuming that P and Q are co-prime. Here P and Q are co-prime numbers and Q can't be equal to 0. Okay, so this is what I'm assuming basically. Now they are asking me to prove it to be rational. So I've taken it as p by q and I initially let it to be a rational number. I will make it as a contradiction and then we can easily prove that this is a irrational number. So take him, I took it to be p by q. Now I am squaring both the sides. What we will get? We will get root 2 square is equal to 2. 2 equal to p square upon q square. P square divided by q square. Okay. So I did nothing. I just squared both the sides. Now, let's simplify this. So we will get p square equal to 2 times q square. Okay. So from here, what we can deduce, from here we can say that since p square is equal to 2 times q square, it means p square is a multiple of 2 because it's quite simple. When I'm multiplying 2 in any number, then that number is obviously multiple of 2. So basically, what from here, what I can say that p square is a multiple of 2. P square is a multiple of 2. Okay. So since p square is a multiple of 2, then obviously बात है कि p will also be a multiple of 2 because if we square the number and that square is multiple of 2, then obviously that number is also multiple of 2 na. So if p square is a multiple of 2, this implies p is also a multiple of 2. ठीक है, तो p multiple of 2 हो गया. Now अब अगर p मेरा multiple of 2 है तो मैं p को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? I can write p equal to 2 times some number, let's say 2 times n. My p is 2 into m. I'm just letting p equal to 2m because I've proved that p is a multiple of 2. So I can write p in this form. So let's put this value of p in this equation. So what will I get? First, let's square this equation. On squaring, I will get p square equal to 4 times m square. 4 times m square. Cool. So p square equal to 4 times m square. Now I am putting this value of p square in this equation. 2 equal to p square upon q square. So let me put it down. I'll get 4m square 4 times m square equals 2 times q square. Okay. So now let's cancel 2 from both the sides. So you will be left with 2 times m square equals q square. Okay. So from here, what we can deduce?
simply like here we said we can also say here that now q is also a multiple of 2. Why? Because q square is equal to 2 times m square, and if any number is and if any number is multiplied by 2, then we can easily say that that number is a multiple of 2. So from here I can say that q is actually q square is also a multiple of 2. And since a square is a multiple of 2, it means that number will also multiple of 2. So q is also a multiple of 2. Okay. So basically what I've proved till now, I have proved that both numbers p and q both are multiple of 2. But initially what assumption did I take? Initially I took the assumption that both numbers are co-prime. Now what are co-prime numbers? Co-prime numbers are those numbers that have only one as their common factor. But since after solving, I have also proved that both numbers have their multiple as 2 also, which means that they are not co-prime. So this is basically a contradiction. Why? Because initially I took them to be rational numbers and I took that both are co-prime. But since on proving, I've proved that both the numbers have one more common factor, which is 2. So they can't be co-prime. So this is a contradiction. And since it is a contradiction, so I can say that root 2 is not a rational number, it is an irrational number. Okay, so from here I can say that since both P and Q have their multiple as 2, so I can say that they are not co-prime. Hence, it is a contradiction. So root 2 is a rational number. Root 2 is therefore an irrational number. Okay. So this is the way, in this way you can prove any number to be rational. Initially take it to be rational, then perform some steps, and if it comes to be a contradiction, so you can say that since it is a contradiction, so my initial assumption was wrong, and the numbers are not rational; they are basically irrational. Okay, so this is the way by which you can prove any number to be an irrational number. Okay, so now let's move ahead. Mm, okay, so now let's do this question from trigonometry. So what they are saying basically, they are saying cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Okay, so let's take this question and let's prove it using LHS. Like I will solve LHS and I will, on solving, I will prove LHS to be equal to RHS. So let's start with LHS. So what is my LHS? LHS is equal to cosec x minus cot x whole square. No? So let me take the whole square function. Okay, so this is my LHS. So now let's solve this. So let's first open this bracket. On opening, I will get cosec square x plus cot square x minus 2 times cosec x into cot x. Cosec x into cot x. Okay, so I've just opened the bracket till now. Now remember one thing, that whenever you solve any question from trigonometry, always try to convert the ratios into sine and cos form, because sine and cos are basically more comfortable ratios. Matlab we usually work in sine and cos functions. So whenever you get any question in
form of cosec, cot, or sec, try to convert it in the form of sine and cos. So I'm doing nothing. I'm just converting this function into sine and cos. So cosec square x is 1 upon sine square x. So 1 upon sine square x plus cot square x is nothing but 1 upon tan square x, which I can write as cos upon sine. So it is cos square x upon sine square x. Cool. Minus 2 times cosec x can be written as 1 upon sine x. So 1 upon sine x and cot x can be written as cos x upon sine x. So it is cos x divided by 1 upon sine x and cos upon sine. So it would be sine square x. Sine square x. Okay. So I guess something happened. 1 second. Okay, no problem. I think it just deleted somehow. No problem. Let me write it again. So basically, what I have written is I wrote down 1 upon sine square x minus, sorry, plus cos square x upon sine square x minus 2 times cos x upon sine square x. Cool. So this I just simplified it further. And then now let's take the LCM. On taking LCM, I will get LCM as sine square x. So in numerator, what will I get? I will get 1 plus cos square x minus 2 cos x minus 2 times cos x. This I will get in my numerator, whole divided by sine square x. Cool. Then from here, you can easily see that this is nothing but 1 minus cos x whole square. मतलब you should see that. मतलब अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, then it's a problem. 1 plus cos square x minus 2 cos x is, मतलब from here you can deduce that this is a function of 1 minus cos x whole square. So let me write it down. This thing is nothing but 1 minus cos x whole square divided by sine square x. Okay. So this thing can be written equal to, let me open it down so I can write it as 1 minus cos x, 1 minus cos x into 1 minus cos x whole divided by sine square x can be written as 1 minus cos square x. 1 minus cos square x. Okay. So this can be written further as, I will open this 1 minus cos square x term. So I will get 1 minus cos x into 1 plus cos x whole divided by, now this thing is nothing but a square minus b square term, which can be written as a plus b into a minus b. Basic 6th class mathematics. So you can write it as 1 plus cos x into 1 minus cos x. Sorry, here it would be 1 minus. Okay. So from here you can jot it down. Basically 1 minus cos x and 1 minus cos x will get cancelled, and you will be left with 1 minus cos x upon 1 plus cos x, which you needed to prove. So this thing is nothing but 1 minus cos x upon 1 plus cos x. And this thing is nothing but this thing is your RHS, as shown here, 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. So it was quite simple. You just need to open the brackets and then convert it into the form of sine and cos. Then question automatically becomes simple. Just open the brackets, and then just apply simple trigonometric formulas and you will get your answer.
जस्ट ये बात ध्यान रखना कि you can't solve any question in sec, cosec and cot because basically we are comfortable in sine and cos functions. So try to convert every question in sine and cos form and then solve it. So from here you can say that you have proved the question. Basically यहाँ से 1 minus cos x और 1 minus cos x cancel हो जाएगा and you will be left with this one. Okay. So this was my next question. Now let's do some integration one. So integration of 1 upon 1 minus sin x by 2. Let's take this one now. So let me go to next page. So basically what is given to us? Integration of 1 upon 1 minus sin x by 2. Okay, so how to integrate this one? Let's start with see how you can approach this question is initially you can see that we can't apply any trigonometric formula to sin x by 2. मतलब sin x by 2 का कोई trigonometric formula ऐसे होता नहीं है, तो हम यहाँ पे trigonometry apply नहीं कर सकते. So we have to think in some other direction. So basically इसमें अपन लोग क्या करते हैं, एक अप्रोच तो ऐसे होगा कि either you multiply both numerator and denominator by its conjugate. मतलब that is the only approach from where you can start with, because अगर आप sin x by 2 को खोलोगे कोई trigonometric formula से and then you will take it to x by 4, x by 8, something like applying 2x formulas, then it will only make your question more typical, it will not solve it. So the approach which you should take here is multiply both the sides numerator and denominator by its conjugate. Conjugate is nothing but 1 plus sin x by 2. So let's do it. Multiply both numerator and denominator by its conjugate, which is nothing but 1 plus sin x by 2. 1 plus sine of x by 2 divided by 1 plus sin x by 2 and 1 minus sin x by 2 will combine to form a, मतलब it would be a plus b into a minus b. So it will form a square minus b square, which is nothing but 1 minus sine square x by 2. 1 minus sine square x by 2. Okay. So this is your function after doing the conjugate. Now you can write 1 minus sine square x by 2 as cos square x by 2. Nothing, just simple, the very basic trigonometric formula. Sine square x plus cos square x equal to 1. So let me write it down. 1 plus sine of x by 2 divided by 1 minus sine square x by 2 can be written as cos square x by 2. Okay. So now you can, one second, sorry. So now you can separate both the identities, like 1 upon cos square x by 2 will become sec square x by 2. Sec square x by 2, and sine upon cos will become tan. So it would be tan upon cos, and tan upon cos can be written as tan into sec. So plus tan x by 2 into sec x by 2. Now here, I have converted the simple sine and cos functions into second tan functions. Why so? Because I know the integration of sec square x, I know the integration of tan x into sec x. So basically यहाँ पे मेरी अप्रोच क्या थी? यहाँ पे मेरी अप्रोच ये थी कि मैं अपने फंक्शन को कन्वर्ट करके कुछ उस फॉर्म में ले जा पाऊँ जिसका इंटीग्रेशन मेरे को ऑलरेडी पता हो. मतलब अगर मेरे को इंटीग्रेशन पता होगा देन आई कैन इजिली डू इंटीग्रेशन. बट इनिशियली मेरे को जो दिया हुआ था 1/1 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता था. तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैं इसको सॉल्व करके उस फॉर्म में लेके आया जिसका इंटीग्रेशन मेरे को बेसिकली पता है. So now I have both the forms. I know the integration of sec square x by 2. I even know the integration of tan x and sec x. So I can easily apply the integration formula and I will get my answer. So integration of sec square x is nothing but tan x. So you will do, and since it is x by 2, so अपने को पता है कि whenever we have a multiple of some x in the bracket, so I just divide it by that thing. So on dividing it by half, 2 will come in numerator. So you will get 2 times tan x by 2
plus integration of tan x into sec x is nothing but sec x. मतलब basically ये होता है ना कि differentiation का पोल होता है integration. So sec x का differentiation होता है sec into tan. So tan into sec का जो integration होगा that will be sec x. And again since it is x by 2, so you will divide by half. So 2 will come in numerator and you will get 2 times sec x by 2. Here x by 2 is the parameter जिस पे हम लोग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो आप 2 को कॉमन ले सकते हो and you will get 2 times, like this is cos 4x. So basically you know how you can solve it is either you can convert it into the form of 3x or 2x, but if you convert it into the form of 3x you will get cos of 3x plus x, so it is not symmetric. So always try to solve the questions in symmetric form. So अगर आपको यहाँ पे सिमेट्री चाहिए तो आपको इसको 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइदर नॉट 3x, बिकॉज 3x में कन्वर्ट करेंगे तो सिमेट्री नहीं रहेगी. एंड देन आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू 3x तब भी सॉल्व हो जाएगा, बट it will take long time, it will take much higher steps than as compared to symmetric one. So always try to solve any question by taking the help of symmetry. So हम इसको जब तोड़ेंगे तो हम we will write it as cos of 2 into 2x. Why so? Because this is a symmetric function, nothing else. Okay, so from here I can write it as it is cos of 2 into 2x. So I know the formula of cos 2x. I can just open it here. So cos 2x is nothing but 2 cos square x minus 1. So let's write it down. 2 cos square, and what is x? X is here. X is 2x here. Basically, in cos 2x, x is the parameter. And here that parameter is 2x, not x. So don't confuse it with x. Here 2 is this one and the parameter x is 2x. So it would be 2 cos square 2x minus 1. Okay. So let's solve it ahead. So now you know, again you can open cos 2x formula. So cos 2x is nothing but 2 times cos square x minus 1. So write it down. 2 times cos square 2x, and cos square 2x को अपन लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1 minus 1. Cool. Now from here you can open the bracket and you can write it down as basically यहाँ पे square होगा, so I missed the square term because it is cos square 2x now, that's why. So from here you can open the square and what you will get 2 times 4 cos power 4x minus 4 times cos square 2x plus 1, and there is minus 1 outside. Now just multiply the bracket and you will get your answer. 8 times cos power 4x cos power 4x minus 4 into 2 is again 8. So it would be 8 times cos square 2x plus 2 minus 1. So from here you will get your final answer. 8 times cos power 4x minus 8 cos square x, 8 cos square x plus 1. Okay, so nothing, it is just you have to open the formula and solve it. मतलब आप यहाँ पे देखोगे सॉल्व करने के बाद भी अपने पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया, cos पावर 8 टाइम्स cos पावर 4x minus 8 टाइम्स cos पावर 2x plus 1. So आप इसको मतलब you can't memorize this thing. ऐसे तो you will have to learn sin 4x, sin 8x, cos 8x. So you have derived these formulas in your paper itself, which is very simple. When you will start it and you will jot it down using your pen and paper, it doesn't take more than 5 or 10 seconds. So it is that simple. You have to just open the trigonometric formulas and solve it. Okay. So this was my next question.
Let's move to next one, symmetric matrix and skew symmetric matrix. So this is basically very easy. So symmetric and symmetric matrix क्या होती है? Let me draw it down to you. See, this is my matrix. Now what is symmetric matrix? Symmetric matrix ये होती है कि जब आप उस matrix का transpose लोगे, then you will get the same matrix again. So let me take a 3 cross 3 matrix. Let me write it down. A B C, A B C. And there is one more thing common in symmetric and skew symmetric matrix. First thing first, always remember that the diagonal elements of a skew symmetric matrix are always zero. So this is one of the very good thing to memorize about skew symmetric matrix, that the diagonal elements of skew symmetric matrix will always be zero. So and symmetric matrix में क्या होता है? Symmetric matrix is nothing but this matrix का transpose उसके equal हो, that matrix can be called as skew symmetric matrix. Okay, so let me write down the example A B C. So here it also you will get B C D E. So if this is your matrix, so अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा then क्या होगा? Now I'm taking the transpose of this matrix. ट्रांसपोज क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोज में हम लोग रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं. सो यहाँ पे मेरी ए बी सी रो है, उसको मैं कॉलम बना दूंगा. सो ए बी सी विल बिकम ए, सॉरी, ए बी सी. Similarly, second row will become my second column. That will be B, D, E. And third row, C, E, F will become my third column, C, E, F. So it would be C, E, F. ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ट्रांसपोज लिया है. एंड ट्रांसपोज में बस रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं. तो अब जब मैं देखूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि इसका अभी दोनों मैट्रिक्स अभी भी सिमिलर है. ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, बी डी ई सी ई है. तो आप देख सकते हो अभी भी दोनों मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर सकता है, बिकॉज बोथ द मैट्रिक्स आर सेम. सो जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसमें उसका मैं ट्रांसपोज लूं, देन ऑल्सो फाइनल मैट्रिक्स मिलती है, उसको जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, then you will again get back your original matrix. So let me show it to you. If this is A, this term would be minus A. This is B, this term would be minus B. This is C, this term would be minus C. ठीक है, अब जब मैं इसे ट्रांसपोज लूंगा, my diagonal 0 minus A minus B will become 0. This row will become column, so 0 minus A minus B. A 0 minus C will also become column, so you will get A 0 minus C, and BC0 will also become your column, which is BC0. तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो जो विजिबल है कि दोनों मैट्रिक्स में 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट्स है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. दूसरी चीज आप क्या नोटिस कर सकते हो, जब आप इस मैट्रिक्स में माइनस में मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट बैक योर ओरिजिनल मैट्रिक्स. जब आप इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करोगे, देन दिस विल बिकम माइनस ए, व्हिच इज माइनस ए. दिस विल बिकम माइनस बी, दिस इज माइनस बी. दिस विल बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस, so this will become a, this is a, this is 0, this is 0. This will become minus c, this is minus c. This will become minus of minus is plus, so this will become b, this is b. This will become c, this is c, and this is 0. ठीक है, तो बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने पे जो आपकी फाइनल मैट्रिक्स आती है, दैट मैट्रिक्स डिफर्स बाय अ नेगेटिव साइन ओनली बेसिकली, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. तो अगर मैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज लिखूं, तो skew symmetric matrix
as all the diagonal elements as 0, and on taking its transpose, the new matrix differs only by -1. ठीक है, तो बेसिकली जब आप नई मैट्रिक्स में -1 मल्टीप्लाई करोगे, जो आपकी नई मैट्रिक्स आई है, देन यू विल गेट बैक योर ओरिजिनल मैट्रिक्स। बेसिकली इसको इसमें जब मैं -1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, देन आई विल गेट बैक दिस मैट्रिक्स। सो दिस इज माय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक पहचान यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग about symmetric and skew symmetric matrices. So this was my this question. Now let's move to next one. In an election, okay, so this is a question from PMC. PMC is nothing but permutation and combination. So इस क्वेश्चन में वो क्या बोला है, इस क्वेश्चन में मेरे को बोला है, इन एन इलेक्शन 3 districts are to be canvassed by 2, 3 and 5 men respectively. Canvas basically means paint. So if 10 men volunteer, the number of ways they can be allotted to the different district is, मतलब basically मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट को पेंट करना है, एंड बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि आपके पास 3 वॉल्स है, आपको 3 वॉल्स को पेंट करना है, और उन 3 वॉल्स को पेंट करने के लिए मेरे को 2, 3 एंड 5 मैन चाहिए रिस्पेक्टिवली। मतलब एक वॉल को पेंट करने के लिए 2 मैन चाहिए, एक वॉल के लिए 3 और एक के लिए 5 चाहिए। तो अब 10 मैन वॉलंटियर करते हैं, 10 मैन वॉलंटियर करते हैं, मतलब 10 लोग बोलते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप उन 10 मैन को कैसे डिवाइड करो कि वो काम खत्म हो सके। बेसिकली मतलब आपको उन 10 मैन को 2, 3 और 5 में डिवाइड करना है, जिससे कि वो एक एक वॉल को पेंट कर सके बेसिकली। ठीक है, सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पीएनसी का। बेसिकली क्या होगा इसमें, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यही है कि जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास वेस है वो है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल आपको एक जगह चाहिए, you need 2 फैक्टोरियल one place, then you need 3 फैक्टोरियल at one place, and you need 5 फैक्टोरियल people at one place. So basically डायरेक्टली लिखो तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट ways of dividing 10 things such that 2 things are same, 3 things are same and 5 things are same basically। ठीक है, सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, हमको बेसिकली 10 लोगों में से 5 लोग चुनने हैं, तो दैट आई कैन डू इट इन 10 से 5 ways। इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके बाद मेरे को ये चीज पता है कि मैंने 10 में से 5 चुन लिए, तो मेरे पास 5 लोग ही बचे हैं। मतलब बेसिकली पीएमसी का क्वेश्चन में आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब आप कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हो, तब आप अगला जो ऑपरेशन करते हो वो रिमेनिंग थिंग से करते हो। तो इसमें से आपने 10 में से 5 थिंग्स ऑलरेडी चुन लिए, तो अब आपके पास 5 ही बची है। तो आपको बचे हुए जो 3 और 2 में सिलेक्ट करने हैं, वो बचे हुए 5 में सिलेक्ट करने हैं। तो यू हैव सिलेक्टेड 5 men out of 10, then you are left with 5 more men। So from this 5 you have to select 3, and now the remaining is 2, so from 2 you have to select other 2 people। ठीक है, सो आप जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप पे ये आ जाएगा। सो लेट मी डू इट। 10 से 5 is nothing but 10 फैक्टोरियल upon 5 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल multiplied by 5 फैक्टोरियल upon 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। मतलब मैं बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इंटू 2 से 2 1 ही होता है बेसिकली। सो लेट मी राइट इट डाउन एज 1। सो यहाँ से 5 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज रिटन हियर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं है, अपने को
10 में से 5 लोग चुन रहे हैं, तो मैंने 10 से 5 तरीके से 10 में से 5 लोग चुन लिए। उसके बाद मेरे पास कितने लोग बचे, उसके बाद मेरे पास 5 लोग बचे, तो बचे हुए 5 में से मैंने 3 और चुन लिए। ठीक है। अब मेरे पास 5 - 3 कितने बचे, 2 और बचे। 2 में से 2 चुनना है, तो 2 से 2 इज नथिंग बट 1। सो आई chosen one more, and on simplifying I will get this similar expression again. Okay, so this is my final answer to this question. पीएमसी का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। Okay, so now let's do this question from sets. So they are saying let x equal to 1 2 3 4 5, ये अपने को एक सेट दिया हुआ है। सो अपने को एक सेट दिया हुआ है x का। x इज इक्वल टू, x में जो एलिमेंट्स हैं दैट आर 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर माई एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये मेरे सेट के एलिमेंट्स है 5। ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट्स में से मेरे को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं yz के। आई हैव टू मेक ऑर्डर्ड पेयर्स कंप्राइजिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स y एंड z। तो अब यहाँ से अपने को y और z का सेट बताना है बेसिकली। मेरे को कंडीशन ये दी हुई है कि y सबसेट इज इक्वल टू x, मतलब y का जो सबसेट है वो x का है। मतलब बेसिकली y इज अ सबसेट ऑफ x। ओके। और क्या दिया हुआ है मुझे, एंड देन दे हैव गिवन z इज आल्सो सबसेट ऑफ x। सो z is also a subset of x, and finally they are saying, and y cap z is empty. What do you mean by cap? I guess cap का मतलब इंटरसेक्शन से होगा। सो y इंटू इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये है कि दिस इज अ नल सेट। ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बताने हैं वाई जेड। मेरे पास जब वाई और जेड पे ये कंडीशन है, तो मैं वाई जेड को कितने तरीके से चुन सकता हूँ बेसिकली। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम सेट्स और पीएमसी, आप पीएमसी का क्वेश्चन भी बोल सकते हो इसको बेसिकली। ठीक है। तो वन थिंग फर्स्ट थिंग इज फिक्स कि जो वाई और जेड दोनों एलिमेंट्स होंगे वो मेरे एक्स से ही होंगे। तो एक चीज तो फिक्स है कि जो भी मेरे को एलिमेंट लेना है वो एक्स से लेना है। ठीक है। तो वाई और जेड दोनों के एलिमेंट एक्स से ही होंगे। तो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे पास मतलब डिफरेंट केसेस बनेंगे, मेरे को हर एक केस को सोचना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है। तो मेरे को वाई से एलिमेंट लेना है एक्स के, मेरे को एक्स से एलिमेंट लेना है वाई के लिए। सो एक केस तो मेरा ये बनेगा कि लेट्स से मैं एक्स का कोई भी एलिमेंट को, लेट्स से मैं एक्स के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ बाई पी। ठीक है। सो पी इज माई एलिमेंट ऑफ एक्स। पी कैन बी इक्वल टू 1, कैन बी इक्वल टू 2, कैन बी इक्वल टू 3, कैन बी इक्वल टू 4 और कैन बी इक्वल टू 5। सो मेरा एक केस तो ये बनेगा कि जो मैं पी ले रहा हूँ दैट बिलोंग्स टू वाई। मतलब बेसिकली मैंने एक्स से एक एलिमेंट उठाया और मैंने वो वाई में डाल दिया। लेकिन मेरे को बोला गया कि वो जेड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाई इंटरसेक्शन जेड इज नल सेट। तो अगर पी मेरा जेड में भी होगा तो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, पी बिलोंग्स टू वाई बट पी शुड नॉट बिलोंग टू जेड। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। देन सेकेंड कंडीशन मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलर फॉर जेड थिंग। मतलब अब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज माई केस वन। दिस इज माई केस वन। मेरा सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस होगा कि मेरा जो पी है दैट कैन बिलोंग टू जेड एंड पी कांट बिलोंग टू वाई। अगेन सेम रीजन, दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है। तो अगर एक एलिमेंट जेड में है तो वो वाई में नहीं हो सकता, और अगर वाई में है तो जेड में नहीं हो सकता। ये दो केस बन रहे हैं। ये दो केस तो सब बना लेंगे, लेकिन देयर इज वन मोर केस विच यू मे मिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक केस इसमें और बनेगा जब पी दोनों का एलिमेंट नहीं है, मतलब पी इज नाइदर एन एलिमेंट ऑफ वाई एंड पी इज नाइदर एन एलिमेंट ऑफ जेड। पी दोनों का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली पी क्या है, पी एक एलिमेंट है फ्रॉम माई सेट एक्स।
तो मेरे पास पी को देने के लिए तीन तरीके हैं। पी कैन आइदर बी एलिमेंट ऑफ वाई, और पी कैन आइदर बी एन एलिमेंट ऑफ जेड, और पी कैन नाइदर, और पी कैन बी एन एलिमेंट ऑफ नाइदर। मतलब क्या तो पी वाई का एलिमेंट हो सकता है, आइदर पी कैन बी एन एलिमेंट ऑफ जेड, या फिर वो दोनों का ना हो। तो बेसिकली मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए तीन ऑप्शन है। तो मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पी है? टोटल 5 पी है। मतलब पी को चुनने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। और इन पांचों के पास तीन ऑप्शन है। क्या तो वो वाई सेट में चल जाए, या तो वो जेड सेट में चले जाए, या फिर वो दोनों में ना जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए तीन तरीके हैं। सो वन को जाने के तीन तरीके। सिमिलरली टू के लिए, टू के पास भी तीन तरीके हैं। थ्री ऑल्सो हैव थ्री वेज। सिमिलरली फोर ऑल्सो हैव थ्री वेज, एंड फाइव ऑल्सो हैव थ्री वेज। ठीक है। हर एलिमेंट के पास तीन। गो टू केस थ्री। केस वन क्या है कि वो एलिमेंट इज अ एलिमेंट ऑफ वाई बट नॉट फॉर जेड। केस टू है कि दैट एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ जेड बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ वाई। एंड थर्ड केस इज वो दोनों का एलिमेंट नहीं है। तो मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए तीन तरीके हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। 3 पावर 5 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा हो तो आप 3 पावर 5 को सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑन सॉल्विंग यू विल गेट टू बी यूनिटी टेस्ट 243। सो टोटल मेरे पास 243 वेज है। ठीक है। सिंपल है, बस आप उसको ऐसे सोचो कि मतलब बेसिकली आपको अलग अलग केस बना के देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा केस पॉसिबल है, कौन सा केस पॉसिबल नहीं है। तो जो मेरे को गिवन कंडीशंस थी, गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरे पास एक ही केस पॉसिबल है कि y इज इन सबसेट ऑफ x, एक ही केस पॉसिबल है कि z इज सबसेट ऑफ x, और दूसरा कि दोनों का मतलब ये तीनों कंडीशन हमेशा होल्ड करनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करने के लिए मैंने तीन केस बनाए। ये वाला केस भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला केस भी इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला केस भी इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन तीनों केसेस के मुताबिक मेरा जो हर एक एलिमेंट है उसके पास तीन तरीके हैं कि वो आइदर वाई में जाए, आइदर जेड में जाए, या फिर दोनों में ना जाए। तो हर एक एलिमेंट के पास तीन तरीके हैं। सो आई विल मल्टीप्लाई ऑल द वेज, बिकॉज दिस इज एन एंड ऑपरेशन। अगर और होता तो फिर मैं बीच में प्लस लगाता, बट दिस इज एन एंड ऑपरेशन, सो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। एंड आई विल गेट 3 पावर 5 विच इज 243 वेज एज माई फाइनल आंसर। ठीक है। सो नॉट एन इजी वन, बट हाँ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू कैन पुट दिस क्वेश्चन इन पीएनसी और इवन सेट्स, मतलब दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ जे मीन्स। ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब अपन आगे चलते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, check whether -150 is a term of AP, this or not. ओके सो बेसिकली मेरे को बोला गया है कि मेरे को एक एपी दी हुई है, और वो एपी में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। मतलब एक डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एपी देख के मेरे पास जो जनरल टर्म्स होते हैं मैं वो लिख लेता हूँ। मतलब फर्स्ट टर्म लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 11। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11, विच इज इक्वल टू -3। दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। तो मैंने एपी के दोनों जनरल टर्म लिख लिए। अब मेरे को क्या बोला गया है? आई हैव बीन आस्क्ड कि -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। मतलब -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं है, मुझसे वो पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखता हूँ। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज माई जनरल टर्म, विच इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। Here, an is general term, a is my first term, n is number of terms, and d is my common difference. ठीक है। तो मेरे को क्या बोला गया है? मेरे को बोला गया है कि मेरे को चेक करना है कि -150 इस एपी का एक टर्म है कि नहीं है। मेरे को वो चीज चेक करनी है। ठीक है। तो ये मैं कहीं चेक कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ए एन को -150 रख के सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं ए एन को जब -150 रख के सॉल्व करूंगा,
सॉल्व करने के बाद अगर मेरे को n की कोई इंटीजर वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब तो ये है कि वो टर्म पॉसिबल है। और अगर n की कोई डेसिमल वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वो टर्म पॉसिबल नहीं है। मतलब आप बेसिकली इसको ऐसा सोचो ना, कि आपको कोई जनरल टर्म निकालना होता तो आप क्या करते हो, आप a की वैल्यू डालते हो, आप n की वैल्यू डालते हो, आप d की वैल्यू डालते हो, n इज योर टर्म नंबर। तो टर्म नंबर कांट बी नेगेटिव, टर्म नंबर कांट बी डेसिमल, टर्म नंबर कैन बी अ होल नंबर ओनली। होल नंबर भी नहीं हो सकता, एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है बेसिकली। n can be first term, it can be second term, it can be third term, it can be fourth term, and so on. So n can be a natural number only. तो आप जब भी कोई आपको जनरल टर्म निकालना होता है, तब आप a की वैल्यू पुट करते हो, आप n की वैल्यू पुट करते हो, आप d की वैल्यू पुट करते हो। तो यहाँ पे मेरे को an की वैल्यू दी हुई है, और मैं an की वैल्यू पुट करके चेक करूंगा सॉल्व करने के बाद मेरे को n एक नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मतलब अगर मेरा n एक नेचुरल नंबर है, देन तो -150 इज अ पॉसिबल टर्म, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है। सो -150 रख के सॉल्व करता हूँ मैं। -150 is equal to a is 11, 11 plus n minus 1 into d, and d is -3। ओके। सो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा -150 is equal to 11 -3n plus 3। ठीक है। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। आई विल गेट -150 is equal to 14 -3n, 14 -3n। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट 3n इक्वल टू 150 प्लस 14, दैट इज इक्वल टू 164। दिस इज माई वैल्यू फॉर 3n। ठीक है। तो यहाँ से मैं n के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 164/3, विच इज इक्वल टू 5 54.6 समथिंग। मतलब बेसिकली एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, एक डेसिमल नंबर आ रहा है। तो जब मैंने n के लिए सॉल्व किया पूरा, तो मेरे को फाइनल जो n की वैल्यू मिली वो एक नेचुरल नंबर नहीं मिली। मतलब आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, दिस वुड बी समथिंग लाइक 54.67 ऐसा आएगा। तो बेसिकली एक डेसिमल वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है, प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि सॉल्व करने के बाद अगर मेरे को n की कोई नेचुरल वैल्यू मिल जाती है, देन तो इट इज अ पॉसिबल टर्म। बट अगर n की कोई नेचुरल वैल्यू नहीं मिलती, इट मीन्स -150 इज नॉट अ पॉसिबल टर्म। तो मैंने उसको सॉल्व किया, एंड सॉल्व करने के बाद मेरे को n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं मिली। सो आई कैन से दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है। सो आगे चलते हैं। इज देयर एनी फॉर्मूला टू रिमेम्बर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ऐसे तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज एन एक्सटेंसिव चैप्टर आउट देयर इन मैथमेटिक्स। सो उसमें जो फॉर्मूला है वो आपको रटने ही होते हैं। कुछ निमोनिक्स होते हैं जो आप मतलब याद कर सकते हो रटने के लिए। जैसे कि मैंने आपको cos 4x वाले में बताया था कि सारे फॉर्मूला आपको याद नहीं करने पड़ते हैं। कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो आप डिराइव कर सकते हो पेपर में। जो जो सिंपल फॉर्मूला है cos 2x sin 2x के, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, रेशियोज हैं, वो कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने होते हैं। बाकी तो आप डिराइव कर सकते हो। और याद करने के कुछ निमोनिक्स भी होते हैं। जैसे कि एक तो ये होता है ये कि दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर टर्म पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेसिकली कुछ टर्म पॉजिटिव होते हैं, कुछ टर्म नेगेटिव होते हैं। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan वाला पॉजिटिव होता है, और फोर्थ वाले में cos वाले पॉजिटिव होते हैं। साइन वाले मतलब यहाँ पे साइन और cosec पॉजिटिव होंगे। tan वाले मतलब tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। और cos मींस cos एंड sec। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप इसको बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो, एड शुगर टू कॉफी,
मतलब ऐड मत ए मतलब सारे पॉजिटिव यहाँ पे, एस का मतलब साइन एंड कोसेक, टी का मतलब टैन एंड कॉट, एंड सी का मतलब कॉस और सेक बेसिकली। तो बेसिकली ऐड शुगर टू कॉफी करके एक निमोनिक होता है बेसिकली ये। सो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बाकी जो रेशियोज होते हैं साइन 2x के, कॉस 2x के, साइन 4x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 3x, एंड जितने भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, रेशियोज होते हैं, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। मतलब बेसिकली इनको याद करके एग्जाम में बहुत इजी हो जाता है। तो निमोनिक्स आप याद कर सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री इज एन एक्सटेंसिव चैप्टर, सो याद तो करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है। सो आई गेस दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया तो मतलब बेसिकली आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया है, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे दे आर ऑन बेसिक लेवल ओनली। मतलब आपको अगर आप थोड़ा बहुत जॉट डाउन करोगे नोट्स पे, मतलब आप खुद जब पेन पेपर लेके सॉल्व करोगे, इनिशियल कुछ स्टेप्स करने पे अपने आप स्टेप्स आने लगते हैं बेसिकली। तो बस आपको एक अप्रोच आनी चाहिए कि मैं प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करूँ, कैसे उसको स्टार्ट करूँ, देन यू कैन इजिली गेट थ्रू इट। ठीक है। So I hope you have understood it. Okay, thank you.